Hello, students. I hope you're doing all good. Today, we're going to discuss the seven C's of effective communication. These are very famous seven C's. We call them seven C's because all these elements, there are seven elements, and they all start with the capital letter C. Now, quickly look at them one by one. Like whenever you are using communication, so make sure that your communication is basically embedded by all these seven elements, right? जब आप कम्युनिकेट करो किसी से कोई मैसेज में कोई एडवर्टाइजमेंट में किसी प्रमोशन में या कोई भी लेटर में किसी मेमो में एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल और टू ऑर्गेनाइजेशन ठीक है इट हैज़ टू बी लाइक हैविंग दी सेवन एलिमेंट्स में सात चीज़ें होनी चाहिए सबसे पहले क्या है दैट शुड बी देयर शुड बी कंप्लीटनेस ठीक है मैसेज शुड बी कंप्लीट इनकम्प्लीट मैसेज नहीं होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग कंप्लीटनेस का मतलब फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग के कंपनीज मीटिंग विल बी इन कराची अब कराची में किस जगह भाई इट्स होल बिग सिटी ये मैं द कंपनी मीटिंग विल बी एट मैरियट होटल ठीक है तो उसमें ना डे लिखा हुआ है ना टाइम लिखा हुआ है ना रूम लिखा हुआ है ठीक है दैट्स नॉट अ कंप्लीट मैसेज तो एनी मैसेज दैट यू गिव दैट शुड ऑलवेज हैव कंप्लीटनेस ठीक है कंसाइसनेस का मतलब है जितना मैसेज देना है उतना ही देना है ठीक है बहुत बड़ा मैसेज नहीं देना दे शुड बी ब्रीविटी ब्रीविटी का मतलब कंसाइसनेस छोटा मैसेज हो लेकिन इट शुड बी हैविंग ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बहुत छोटा भी ना हो लेकिन इट शुड बी हैविंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ठीक है व्हाट इज क्लैरिटी क्लैरिटी का मतलब है उसमें साफ लिखा हो जो आपने मैसेज देना है दे शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी कोई डबल मीनिंग ना हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कंसिडरेशन जिसके लिए आप लिख रहे हो उसको कंसिडरेशन दो यू एटीट्यूड यूज करो ठीक है शो सम कर्टिसी कंक्रीटनेस कंक्रीटनेस का मतलब है सॉलिड मैसेज हो जिसमें फैक्ट्स हों ठीक है कोई जनरलाइज बात करने के बजाय पे फैक्ट पे बात करो कि दैट वुड बी कंक्रीट स्टोरी ठीक है ऑब्वियसली दैट शुड बी करेक्ट मैसेज मैसेज आपका करेक्ट होना चाहिए ताकि कोई इसमें फॉल्सिफाई या कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना हो ठीक है लेट्स लुक इन डिटेल if you go step by step so these are the objective of this slides ठीक है and then let's quickly go in detail of it. Okay, we're talking about some example also here. The schedule for the project was very tight, and all the team members, including Liam, were required to work extra hours. Okay, obviously a tight deadline to follow in a project. So some people were required to work extra hours. ठीक है, कुछ लोगों को काम करना था extra hour या सबको करना पड़ा extra hour because deadline meet करनी थी project की. So now what happened? As per Ubersoft company's policy, each employee had the flexibility to put in extra hours either from house, from office or from home. ठीक है या तो आप घर से बैठ के कर लो या फिर वहीं बैठ के ऑफिस में काम करते रहो दिस इज अप टू यू तो इसमें basically there's an example we're trying to communicate have it over here hence an employee working extra hours from home could access the company's server by logging into company's virtual ठीक है लिमिटेड वीपीएन इज बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ठीक है घर से बैठ के आप उसमें लॉग इन करोगे और पता चल जाएगा कौन किस वक्त लॉग इन हुआ और यू गेट द इन्फॉर्मेशन Liam submitted an initial design sub document to the client for the review ठीक है अब इसमें हुआ क्या वीपीएन में वो लॉग इन हो गया उसने सारे डॉक्यूमेंट भी दे दिए लेकिन मसला क्या हुआ मसला ये हुआ कि Liam waited for the client's call for the entire weekend वीकेंड में बैठ के वो काम कर रहा है क्लाइंट की कॉल का इंतजार कर रहा है क्लाइंट उसको कॉल कर रहा है लेकिन क्लाइंट का नंबर लैम का नंबर नहीं मिल रहा बिकॉज लैम ने जो नंबर दिया था उसमें कोई मिस्टेक हो गई थी कम्युनिकेशन में और उसके पास सही कॉल नंबर नहीं है सो व्हाट हैपेंड कॉल भी करता रहा और लियाम इज वेटिंग ऑन द अदर साइड कि मुझे कॉल नहीं की इसने सो बोथ आर बेसिकली हैविंग कम्युनिकेशन एरर ठीक है हाउ कुड हैव वी सॉर्टेड आउट दिस प्रॉब्लम ठीक है All this confusion could have been solved if Liam had shared his mobile number
and then cross check with the client to see if the client had noted it down correctly. एक तो क्रॉस चेक कर लेता कि भैया आपने मेरा मोबाइल नंबर लिया है, तो क्रॉस चेकिंग होती है। ये अदर वे क्या होता है कि ही शुड हैव प्रॉपरली ईमेल्ड इट। अगर आपको कोई नंबर है या कुछ है, तो रादर देन राइटिंग इट ऑन द फोन, डिक्टेट करने के बजाय यू कैन ईमेल इट। ईमेल करने का फायदा क्या होगा, अगर आपने इसमें गलती से गलत भी लिख दिया है तो ही कैन राइट इट बैक कि भैया आई एम कॉलिंग ऑन दिस नंबर बट देयर इज नो रिस्पॉन्स, इफ यू कैन हैव एनी अदर नंबर तो प्लीज सेंड मी। दूसरा करके वो आपको नंबर दे देता, दूसरा नंबर। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू टू नोट। Hence, you can understand that effective communication involves many factors have to be considered to make it effective. ठीक है, अभी हम देख रहे हैं 7 C's का क्या बोलती है। ओके, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एक सेंडर होता है जिसने कोई मैसेज इनकोड किया। इनकोड मतलब उसने उसको अपनी ज़बान में जो भेजना चाहते हैं उसने अपना मतलब से उसको ट्रांसलेट किया किसी लैंग्वेज में, किसी राइटिंग सिंबल्स में, किसी भी चीज़ में। ठीक है, और वो मैसेज कम्युनिकेट हुआ, फिर अगला बंदा उसको अपने दिमाग के हिसाब से, अपने लैंग्वेज के हिसाब से उसको डिकोड करता है। उसका मतलब उसको दिमाग में जो है वो उसको समझेगा और रिसीव करेगा। ठीक है, दिस होल प्रोसेस इज बेसिकली component of communication process, sender, encoding, मैसेज, डिकोडिंग एंड रिसीवर। ठीक है, कभी कभार आप ना कहते हो, आप आपने सुना होगा लॉट ऑफ टाइम के मैं आपको शायद मतलब समझा नहीं पा रहा जो मैं अपने दिमाग में है। ठीक है, आई कैनॉट कम्युनिकेट माई मीनिंग। ठीक है, तो ये होता है बिकॉज यू नॉट हैविंग प्रॉपर एनकोडिंग, या फिर जो मतलब आप समझाना चाह रहे हो सामने का बंदा सो कोई और मीनिंग ले रहा है। ठीक है, इज एबल टू डिकोड समथिंग डिफरेंट। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, इसको कहते हैं व्हाई व्हाट मेक्स कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट बिफोर लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली यू शुड अंडरस्टैंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस वजह से जो है ना वो इनइफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। राइट, इफ दिस कैन वर्क, इसमें कोई ओके, व्हाट मेक्स कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव, इसमें लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकती है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपने कर दी तो प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन है, नॉइस है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, जेंडर डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, सो दीज ऑल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इनको अवॉइड करना है ताकि देयर शुड बी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन अक्रॉस बोथ द एंड्स। ठीक है, मतलब आप जो मतलब समझाना चाह रहे हो वो बंदे को वही मतलब समझ आए, इंस्टेड ऑफ कोई और मीनिंग उसका वो आप किसे ले। ठीक है, ओके। Again, 7 C's, there are 7 C's. We already discussed them. Let's see if there's any detail about it. We already did them. Obviously, uh, courtesy. Courtesy is basically a message implies a message should have sender's expression. जैसे मैंने बताया, रिस्पेक्ट देनी है बंदे को जिसको आपने लिखना है। You should be showing courtesy towards a person. Politeness होना चाहिए। ठीक है, on the same time it should not be like very boring, it should be enthusiastic, reflective। ठीक है, कॉमन courtesy expressions क्या है, हैव अ गुड डे, टेक केयर, मे हेल्प यू। ठीक है, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, दीज ऑल courtesy examples। ठीक है, your expressions you may say। okay, emotion should be managed in a conversation। ठीक है, uh, if you're getting angry you should have calm by yourself, speak to the person if you other is not angry। ठीक है, यूज यू एटीट्यूड। ठीक है, व्हाट द यूज ऑफ वर्ड यू, दिस अवॉइड्स ब्लेम। ठीक है, आप यू नहीं बोलते। ठीक है, यू जनरलाइज इट कि ठीक है, यू डोंट से यू हैव डन दिस रॉन्ग, आप कहते हो देयर समथिंग मिस्टेक, लेट मी चेक। ठीक है, इस तरह करके बात करते हो। तो मेंटेन आई कांटेक्ट। ठीक है, मूव द डिस्कशंस टू प्राइवेट एरिया इफ पॉसिबल। टिप्स टू इम्प्रूव वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, किस तरह अपने वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। An individual may be extremely hard working and intelligent worker, but to taste success in the face competition, one, the world has to be good. A person has to be good and impressive communicator। आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन if you cannot communicate that to your leadership, you know,
top management, that work is not good for anything. ठीक है, तो in organization you will not get too many chances to win the confidence of your boss and fellow workers. तो आपको communicate करना आना चाहिए, जो भी आपने काम किया, you need to have good communication skills. Okay, I think that's end all the part we've done. Hope this was a learning session for you. Thank you very much. Stay cool.